बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारे साथ बहुत मोहतरम और सीनियर ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी के मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबमरीन फोर्स, जो नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फख्र का बायस है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ दो सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। कैप्टन अदीब को तो आप जानते ही हैं, और उनके साथ मौजूद हैं एडमिरल मोहम्मद हारून साहब, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, पाकिस्तान नेवी के वॉइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किया, पाकिस्तान सबमरीन फोर्स को हेड कर चुके हैं और 2007 में रिटायर हुए। और एक बड़ा एक्सप्लोसिव दौर था कि पाकिस्तान जब वॉर ऑन टेरर के अंदर दाखिल हुआ, फिर 2002-3 की जो इमरजेंसी थी, उस वक्त ये एक इंतहाई अहम पोस्ट पे बैठे हुए तमाम ऑपरेशंस देख रहे थे। तो आज हम दोनों सीनियर ऑफिसर्स से पूछेंगे कि पाकिस्तान की सबमरीन फोर्स की एवोल्यूशन और क्यों सबमरीन्स पाकिस्तान नेवी की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है उसमें बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। तो पहले सर हारून, आपसे मेरा सवाल है कि हमें पता है कि 64 में हमें सबमरीन मिली, टीएनएस गाजी मिली, और 64 के अंदर 65 की वॉर में इंडियन नेवी बाहर नहीं निकल सकी सबमरीन, हमारी सबमरीन की वजह से। फिर 71 में गाजी के जो एक्सप्लॉइट्स हैं, हालांकि हमें 3 और सबमरीन्स हम ले चुके थे। तो थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि पाकिस्तान की जो सबमरीन फोर्स की एवोल्यूशन किन किन अदवार से हम गुजरे। यार बड़ी लंबी कहानी है, बट आई कट इट शॉर्ट। 63 में यूब खान गए थे उधर अमेरिका, तो देयर ही मेट प्रेसिडेंट कैनेडी, एंड ओवर देयर दे डिसाइडेड ओके वी विल गिव यू वन सबमरीन. Along with him was Commander Tasneem, Lieutenant Commander Tasneem. He was his ADC at that time. And then things, fruited all well. And 64, they brought the submarine. It was given to us, headed by Admiral K.R. Niazi. He was a commander at that time, and then Tasneem was his executive officer. In 65 war, what is very interesting is the main thing is that the submarine made sure that her presence outside the Indian harbors and her presence in the Arabian Sea was a great effort in which it influenced the Indian Navy to stay in, डरे हुए अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकले. तो ये है कहानी उसकी 65 वॉर की. इसमें 70 में ये बाकी 3 सबमरीन्स आई थी डेफनीज, एंड 70 की एंड में दिसंबर में 1970, एंड देन 71 वॉर में प्रॉब्लम हो गया जो दिसंबर 71 में. So within a span of 1 year of their arrival, the war started. There were good events there, and there were unlucky events in which Admiral Tasneem came across a number of ships, Indian Navy ships, about 5 of them. And the war had not started, and he had no idea the war will start. It was probably on the 2nd of December or 1st of December. And he didn't attack. He could have attacked. He should have attacked, or whatever. I don't blame him. He's such a big man and a hero also. But then on 9th of December, he shot down one and damaged the other one. What is very interesting is that the Indians, prior to that, on the 3rd and 4th, attacked Karachi harbor with their OSA missile attack submarines, and in which PNS Khyber as well as one minesweeper was sunk. But then you see, things kept on moving for the next 4 or 5 days, and then Admiral Tasneem sank this cookery outside Oka, and that was a great achievement. And the other ship was sunk. After that, the Indians never dared to turn out and come up with their attacks onto Karachi. So this is one part of the story. The point is the presence of submarines out at sea creates a lot of problems for the enemy.
The enemy doesn't know where it is, where what is it doing, and what is his mission. So that is what it is. What is very interesting is that while all this went on, the Indian Navy submarines were lurking around about 100 to 150 miles from Karachi. There was an incident in which I was on bridge of a ship, Shah Jahan, and I was given information that the torpedoes have been fired onto our ship. Quickly, I took torpedo countermeasures immediately, and then our squids were loaded, and I quickly fired onto the submarine. And after some time, I fired another two, and then the captain was on the bridge by that time, and then we came back to the harbor. I think a day or 2 days later. Many years down the line, something very interesting that you have never heard of. I was in New Delhi as naval attaché, and from there I had gone to Bombay. And the FOCNC Western Command was Vice Admiral Sakhawat. And I met him over there in their mess. And he was telling me that, he was there. He has been to our borders and all that. And then I saw on his chest a medal known as Veer Chakra. And I said, how did you get this? What did you do? What did you sink? Job was done by the OSAs. So he told me that he was there and he fired at a number of PN ships and all that. So he told me that he fired at a lone ship which was moving around about 75 to 80 miles down south. And then I asked him what happened. He told me that, that ship counterattacked and, we had to evade. I said, fine. I said, do you know who was that person who fired back onto you, the squids and all that? He says, I don't know. I said, I was the one who fired the squids. He looked at me in my eyes and said, Yaar, hila diya tha. Fair. Anyway, this is a story very little known to the people within the Navy and outside also. He was given Veer Chakra. That is how things happen. And this is one incident that I'm talking for the first time. Yeah, so the submarines, with their mere presence out at sea, at far off places, at the furthest frontier. I always say the submarines engage the enemy at the furthest frontier. Siachen, Bahawalpur, Sindh, it is just a small little thing. And when submarines operate, they are miles away and not small little kilometers, it's just miles away. And when you are operating at places like 400 to 500 to 600 miles, nautical miles, life is difficult. Life is problematic. And particularly when you have in your command a submarine which is without AIP, air independent propulsion, and that and also not a nuclear submarine. The captain is always worried about the levels of the battery. And it is sometimes, or most of the time, very difficult to maintain the battery or to charge the battery. It takes a lot of effort, a lot of evasive measures, and then you come up and charge your batteries. The enemy always operates its systems during peacetime also. So do we, but then one has to be very careful. They have these platforms within the 50 fathom and the 100 fathom line outside their harbor, big harbor. And they're very vulnerable, very vulnerable. The enemy's systems operating from Kathiawar coast are also under our eye. Small little things, but they happen. That's the problem. सर मैं आपका जिस जमाने के अंदर आप पाकिस्तान नेवी के टॉप पे थे, उस जमाने में हमने देखा कि मॉडर्नाइजेशन जो है खास तौर पे करीमुल्लाह साहब के जमाने में बड़ी स्पीड अप हुई. तो अब जब आपने कमीशन लिया 70s के अंदर, अर्ली 70s के अंदर, 71 के अंदर, और आज की जब आप सबमरीन फोर्स देखते हैं तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? कैपेबिलिटीज कैसे एनहांस हुई? There are a number of things that happened when I was compact. There were a lot many events that took place at that time. The ships at that time used to do, before me, for 10 years, they never went out beyond 1,200 hours at sea. When I left as compact,
All ships had done more than 6,000 hours at sea, and the submarines had doubled their time out at sea. Similarly, the aviation had also doubled the time out at sea. So that is one of the achievements that I made. The other thing is that when the tsunami came down south in the Maldives and all that, early in the morning, I was reported by the task force commander at that time. He was anchored outside Maldives, and he told me what has happened. I gave him straight orders to go and survey the area. So what happened was that in a in about an hour, I got the report back as to what has happened, how Maldives Island has almost sunk. Then I asked the task force commander over there to start the help that they can give, all the assistance and aid. And from the ship, Boaven, that is the logistic ship, we put a lot of effort to put the airport, right? The airport, everything had gone, tush, everything was finished. So our chaps went over there and they put the airport right. They put a lot many things correct, gave a lot of food and all that, cooked food in the ship and sent it over there. सर अदीब आपकी तरफ मैं आऊंगा सर आप 60s के अंदर 65 की वॉर के बाद कमीशन हुए तो जो इम्पैक्ट था सबमरीन पीएनएस गाजी का और खास तौर पे 71 की वॉर के अंदर वो क्या था नेवी के मोराल क्योंकि आप एक बहुत होस्टाइल एरिया में काम कर रहे थे चारों तरफ से एनवेलप्ड बाय इंडियन फोर्सेस लैंड और नेवी इंडिया की एक बड़ी नेवी थी तो उस वक्त जो ऑफिसर्स ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर जो है कोऑपरेट कर रहे थे उनके मोरल के ऊपर हमारी सबमरीन गाजी का क्या इम्पैक्ट था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 71 वॉर के हवाले से पहली बात तो मैं वजाहत ऐड करना चाहूँगा जो एडमिरल हारून ने बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे फ्यूचर जो है वो बदल जाता है और अगर वो हो जाए तो फिर फ्यूचर दूसरा हो जाता है 2 तारीख को जो एडमिरल तस्नीम ने फोर्स लोकेट की थी और मैं उस समंदर पर था आई वाज ऑन पीएनएस ढाका और उन्होंने वहां से रिपोर्ट भेजी थी एनिमी कांटेक्ट रिपोर्ट वो मैंने प्लॉट की और उसमें चार्ट के ऊपर 2 बड़े जहाज एस्कॉर्टेड बाय अदर डिस्ट्रॉयर्स एंड शिप्स आ रहे थे नॉर्थ वेस्ट हेडिंग टुवर्ड्स अस 2 शिप्स वर एक्चुअली बड़े जहाज जो थे वो मर्चेंट शिप थे जिनको ओसा कैरी कर रहे थे यही मिसाइल बोटें जो लेके आए नजदीक यहाँ पर उनको लोअर किया फिर उन्होंने अटैक किया बिकॉज दे कुड नॉट did not have the range to sail from there. तो वो रात अगर इनको मिलती तो पाकिस्तान नेवी की कहानी दूसरी होती उसके बाद नॉट ओनली वॉर एट सी बट पूरी वॉर का नक्शा ही बदल जाता टू द इंडियन नेवी राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द वॉर तो बहुत कुछ बदल सकता था लेकिन उसके बाद वो हालात दूसरे हो गए एंड देन एज ही सेड राइटली तस्नीम साहब को दूसरा जहाज मिला उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया तो ये तमाम चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अब आ जाते हैं मोराल की तरफ आई वॉज इन ईस्ट पाकिस्तान एंड सो वॉज एडमिरल हारून हम लोग एक ही जहाज पे थे उसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया ये गन बोट पे चले गए तो वो वहाँ पर बीइंग यंग पीपल एट दैट टाइम जो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस वो इतना हमारे जहन में क्लियर नहीं था कि सब हमें प्रैक्टिकल लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे एंड वी कुड सी that people हमारे इर्द गिर्द हमारे जो फेलर्स थे और जो they were full of high spirit and अपना जो टास्क था उसके ऊपर काम कर रहे थे so far as your question is concerned the morale of the officers and men remained very high और उसी अंदाज से काम कर रहे थे जैसा कि करना चाहिए था I was with Captain Adeeb in East Pakistan. I was given command of a gunboat and I used to take rations and personnel as well as ammunition from Narayanganj to various places. And I made about 8 or 10 patrols to various places along the Padma River and along the Meghna River. It was very hectic, very hectic. It was, I was alone. I was a sub-lieutenant with one stripe and I was taking hundreds of men from one place, from Narayanganj to Padma to Richa to, Bulandu Ghat to, I don't know, on the other side, number of places. It was difficult. It was difficult. Ammunition. I was always worried about, somebody firing onto the ship.
carrying explosives and all that. But anyway, things happened. It was okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. But then, you know, you must, what is very interesting is that you must always show an offensive demeanor. If you are showing a defensive demeanor and you show that yourself, okay, I will see and what will happen and however what will happen and however, moreover, furthermore, nevertheless, no, show an offensive demeanor. Things went okay. Everybody falls in its own place. So remember one thing: the submarines are an offensive weapon system that operates at the furthest frontiers of the country. And the depth that you were talking of, the depth is there. Remember one thing: that the sea cannot be conquered. You can learn the art of living over it. You can learn the art of staying over it, but you cannot conquer the sea. Nobody has done it. Look what is happening in South China Sea. Look what is happening in the Mediterranean. They cannot conquer the sea. I'm not saying that it's said by not many other people for me. Rather, it is the French Admiral who said this during his war with the British. खुशकिस्मती ये है कि आज दो वेटरन्स हमारे साथ हैं जिन्होंने जंग लाइव एक्शन देखा है। सर 71 की वॉर से लेके अब तक, यानी कि जो आपने एवोल्यूशन देखी और 71 के वॉर से जो हमने अखज किया, सर किस हद तक हमारी नेवल स्ट्रेटेजी में उनका अक्स जो है वो नजर आता है? क्योंकि इंडिया सर देखा कि बहुत तेजी से एक्सपैंड की। अब तो उनकी कमांड्स आप देख लें, एक बड़ी नेवी है। अमेरिका उनको खुश करने के लिए जो है कभी बीका कर रहा है, कभी कोई उनके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, उनको एडवांस लेके जा रहा है। तो हमने क्या सीखा उस जंग से और किस तरीके से जो हमारी ड्रॉबैक्स थे उनको हमने कवर किया जो 71 में हमसे गलतियां हुई थी? There are a number of things. All along, we operated second-class ships within the Navy. The submarines were new and they performed and they gave results also. Along the line, we have carried along with the US, who have been playing the policy of carrot and stick. When they required us, we bent over. We should not have done that. We should have accrued more benefits from them. As a matter of fact, we have been in loss as far as this war on terror is concerned. And previously, during Raul Huck's time also. We should have known our Qibla. What direction do you want to go? What direction do you want to play? And one must understand the enemies and one must understand the friends. And remember, in international relations, the friends and enemies, they change places, change locations. You know, this happens. Yeah. We did so much for the Afghans, and what did we do? Again, the money coming from Adeeb, they were working behind the scenes. 71 की वॉर के बाद सर एवॉल्व किया हमने, काफी चीजें, कॉन्सेप्ट्स हमारे नए बने और फिर 83 के अंदर, गालिबन 83-84 के अंदर जब ब्रास टैक शुरू हुई है, इंडियंस ने की है, क्योंकि पंजाब उनका उस वक्त इंसर्जेंसी से, फ्रीडम स्ट्रगल से भरा हुआ था। तो ऑब्वियसली सर उसके जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर को देख रही थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया की तरफ से अटैक, तो वो क्या असबाब थे जो हमने सीखे थे जिनके मुताबिक हमने इस इमरजेंसी के अंदर पाकिस्तान नेवी ने इंडियन जो थ्रेट को परसीव किया और उसके लिए तैयारी की? I was out at sea the first day, man. I was told go and I went. I was commanding a submarine. I was called in the morning, at night, and I was told go and I went. तो जो सवाल है उसके जवाब में ये कहूँगा कि 71 वॉर हो या 65 वॉर हो, एक चीज बड़ा समझने की जरूरत है फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी। और जो हुआ कि तो दो चीजें ऐसी थी जिसको बड़ा सेटबैक मिला था बिकॉज ऑफ सर्टेन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि द बैटल फॉर पाकिस्तान विल बी फॉट इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब। So this was the basic mistake that we had in और इसकी और ये तब्दीली जो है वो अभी तक वो आई है in terms of
acquisition of weapon systems, in terms of very intelligent use of leadership traits by all the chief of naval staff जो उसके बाद आए हैं, and senior people like him sitting there, जिन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बड़ा सही मानों में इस्तेमाल किया और उन तमाम वेपन सिस्टम्स को लिया जो कि हमारे मैरीटाइम डिफेंस के लिए जरूरी थे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वर एट द ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट स्ट्रेटेजिक लेवल पर ये डायरेक्टिव आता था. अब जाके तब्दील हुआ है, वेयर पीपल हैव नाउ रियलाइज द सबमरीन फोर्स is in the real sense defensive and offensive weapon system, which gives you a second strike capability, and as such वो weapon systems को दिए गए. और अब आपके पास 71 वॉर से और अब तक में ये फर्क आ गया कि your force at sea is much more potent, is much more ready to respond in all दूसरी भी कोई भी eventuality आएगी, because the leadership of the Navy has very judiciously used the limited resources for procurement of weapon systems and weapons जो आपके लिए बायस है इत्मीनान है, and we are able to say that maritime interest will be protected. सर आपकी तरफ आऊंगा सर. लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का सर स्ट्रेटेजिक डेप्थ. हमने ये देखा कि जब आप डेटरेंस की बात करते हैं तो रीस्ट्राइक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए. जब आपके पास रीस्ट्राइक आ जाती है तो आपकी कैपेबिलिटी आ जाती है तो आपकी. अब हम पाकिस्तान एक पतला सा मुल्क है, हमारे पास वो डेप्थ नहीं है कि हम अपने एसेट्स को इंडिया की या दुश्मन की पहुंच से दूर रख सकें. उसका एक ही तरीका है कि नेवी जो है, सबमरीन्स जो हैं, वो हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं. तो बेसिक जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हुई, जैसे कि आपने भी कहा, वो समंदर है. तो आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डेटरेंस है और वो अगर प्रिवेल करता है, अगर वो अपना इम्पैक्ट डालता है, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह नेवी है. तो आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे कि क्या हमारी सबमरीन फोर्स जो है वो किस तरीके से इस डेटरेंस को ना सिर्फ प्रिवेल करवा रही है बल्कि इसकी मजबूती का बायस बन रही है? A long time back, I was the first person who gave a briefing to many senior officers as well as the Prime Minister of this country on the second strike systems. First of all, you must understand the definition of second strike system. The second strike system that you must have is that it must be able to withstand the first strike of the enemy and be alive and be kicking. And the only system in the world as of now is based on the second strike system is based on in the submarines. The second strike system, please understand this thing, that I gave them the definition of the second strike system. The Navy has been pursuing this and Alhamdulillah, things are taking place. Remember a few things. मैंने आपको बोला that your demeanor should be offensive. The moment you show weakness anywhere, there's a problem. The second strategic concept is within the Navy that you must cause immediate attrition on the enemy units. They must go down in the Davy Jones locker the earliest, because once they are removed, then you can only have the freedom of movement around. That is what I'm saying. It will take a while, but the strategic systems are coming up, should be there soon, should be there or already are there. However, there is a concept that what Adeeb has just mentioned, that is, war will be fought on the plains of Punjab. For heaven's sake, war will be fought all along the borders. War will be fought out at sea, in the air. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था. सेकंड प्रोग्राम में हम सबमरीन फोर्स पे बात करेंगे, उसकी एवोल्यूशन पे बात करेंगे और आज हम कहाँ पे खड़े हैं. स्पेशली बात करेंगे जो टर्किश और चाइनीज के साथ हम अपनी सबमरीन फ्लीट को अपग्रेड कर रहे हैं, नई सबमरीन्स बना रहे हैं, उनसे जो मदद ले रहे हैं. अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, सर हारून को इजाज़त दीजिए, सर अदीब को इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.